close of our conversation. First things first, if you guys are asking me, Cliff, what is Cleos? You will understand that Cleos is more than just a platform. Cleos is an experience, and to give you guys even much more exciting news, is that from next week going, you guys will see a much more different even interface from what you guys are seeing now, because a lot of things have been updated even in 2025 from our Q1 going. But first of all, if you're asking me, Cliff, what is Cleos, and it's the first time that you are seeing this platform, Cleos is a place where a lot of people are going to have experience throughout the entire journey to be able to become transformed to make money on their own on a digital domain. Now, before I talk to you guys about even what is available now, I want to tell you guys what is coming before we talk about what is available now. So as if you look at this category tab over here, you can see we have what we call Start Your Journey, Meet the Educators, Forex, Crypto, E-commerce, and Artificial Intelligence. Now, we will not talk about these three yet because they are coming up soon. And so even when you click on the website, you will see artificial intelligence courses are coming soon. But first, let's roll down a little bit and let's see how you can basically kick off even in Cleos. The first thing you have to understand is that the idea behind what we are trying to do is quite very simple. In my entire journey in the financial market, as a student, even before I became an educator, one thing I realized is that the industry, well, with so many platforms out there, have knowledge and information, but they are not structured in a way to give a person from point A to point B. So what you are seeing right here is what we have done so that people will not just start. So with Cleos, you don't just start. If you are a beginner, we actually make sure that we take you through a beginner's journey. And I'm going to give you guys an example of what I mean by this. Now, when you go down here, you can see every single thing on the website and so on and so forth. But let me just give you guys a quick tour here. So I'm going to log out and I'm going to come in back with a different account so that you will know. For example, let's say if you are logging in, okay? So let's say if you are logging in for the first time, this is going to basically be at the end of the day, you're going to just basically let's go to the homepage. Okay, so let's say this is the homepage. The first thing that you will understand is this, is that if you click on Start Your Journey, this is the first thing that you will see. Now, I want you guys to listen to this carefully now. Every single thing you see on the Cleos page is structured in a way to give you an experience. So what you see over here, which says your trading life and your actual life, they mirror each other. It's not just an interface to make you look beautiful. It's really something we want you to understand before you click on Let's Begin. So let's say you just signed up and this is your first time ever about to learn how to trade. The first thing that you will see is when you click on the Start Your Journey part, you will see what it says. Your trading life and your actual life, they mirror each other. So if you click on Let's Begin, you will see different type of categories here. Now, these categories, we have Beginner's Journey, we have the Titan Stage, we have the Cleos Journey, we have the Meet Your Educators, Trading Strategies, and MindX. There are many more categories coming, but let's just talk about these 6 here first. You cannot be able to access the Titan Stage and the Cleos Journey unless you are done with the Beginner's Journey. Why? Because when you give people, I always say this, that in trading, when it comes to the knowledge of trading, it's not a buffet of knowledge. You don't choose what you want. You have to follow a system to become the trader. So we have made this category in such a way that there are some categories you cannot access unless you are done with a specific category. Okay?
So let's say, for example, you do click on beginner's journey. Now, the first thing I want you to understand is that it will not take you straight forward to videos. Now, some of you may ask me, Cliff, why? I really want to watch videos now. I know, but that is why we are the expert. Because when we just let you go ahead and watch a lot of videos, what is going to happen is you will start to eventually become confused because you don't even know who you are and how the market reflects on you. Remember what I told you in the beginning? Your trading life and your actual life, they mirror each other. So what we did is psychologically, we came up with a series of questions. And you guys are going to love this. These questions are structured in a way to show you what can reflect in your trading, negative way or a positive way. So let's just do some quick example here. So let's say, for example, question number 1. When you face a difficult decision, how do you approach it? Now, this question has nothing to do with trading, but it has everything to do with trading. I'm going to say it again. Even though this question has nothing to do with trading, it has everything to do with trading. Because the way you react or you approach a difficult decision tells a lot about who you are and how you will trade. So let's say, for example, if you go like, I weigh the pros and cons carefully before making a choice. I think about it briefly but I usually go with my instinct, or I make decisions quickly to avoid overthinking. Now, this is why I want you guys to listen to this carefully now. Even though you have the choice to answer every single question the way you want. So let's say if I choose C, I make decisions quickly to avoid overthinking. I'm going to click next. Now, when I go to the next side, it's going to go to the question number 2. Now, let's say you are somebody, you don't care about the questions, you just want to click. If you start to answer some of these questions in any way you want, the answer you gave in question number 1 can contradict with the answer you gave in question number 2. What am I saying? That these questions are carefully designed to really expose something about you that you didn't even know. Something about you that you didn't even know that was within you. So these questions are not just question number 1 or 2 or 3. They are carefully selected, puzzled questions that shows you that your trading life and your actual life, they mirror each other. Now, after you are done with answering all these questions, the next thing you're going to do, now I'm going to go to my student back office, okay? Now, right after that you are done with these questions and you have answered them. So this account that I have here has finished answering the questions. It will now take you to what we call my journey. And you guys are going to have the privilege today to hear from one of our educators as a testimony of how even this space, for him, the educator, how is the experience so far for him? And I'll bring this individual up on the call before I wrap up. But after you are done finalizing your question and your self-assessment, it will now bring you to where we call My Journey. In this My Journey, it's a series of different tasks that you have to accomplish to finish beginner's journey, then to go to the Titan stage, and then to go to the Cleo's journey. Before we go on, let's talk a little bit about even the courses. I'm going to take our wonderful educator here as a point of example here. Now remember, when you finish the self-assessment test, your learning page, which is here, will not look like this. You will need to enroll in that course in order for it to become part of your back office. Now, from Monday, Tuesday, maximum 1 week time going, the whole entire back office here for your page will be a little bit different
The more you do many activities, the more different tabs will be added onto here for you. For example, when you are done solving the questions, you will see something here called My Journey. You will see My Psychology. You will see My Educator if you subscribe to any educator. So let's say, for example, I want to watch NAVE courses here. Now, the first thing that you will understand here is, yes, you can watch as many courses as you want from example here module number 1. But first thing you need to understand is this: you cannot watch this video number 2 without accomplishing video number 1. Again, why is it like that? You remember what I told you? The number 1 problem in this industry is people do not know what to learn, when to learn, and how to apply what they learned. And that is why the number 1 thing we are doing here at Kleos is to structure the education in a holistic way to make sure that people become equipped. So if you don't finish watching video number 1, you will not be able to go on to video number 2. And you will not be able to go to video number 3. And even when you finish module number 1 from our educator here, you will need to take this quiz in order for you to pass to go to the next stage. And after you are done with all these stages, you will now be able to go and get your remark in a certificate. Now, let's say, for example, you don't want to watch the videos at the same time. No problem. All you have to do is to schedule your learning. So, for example, if let's say, hey, you want to watch 2 or 3 videos every day, all you have to do is to click on Get Started. Select an option. Do you want to learn daily? Do you want to learn weekly? Do you want to learn monthly? Why? Because here at Kleos, we have something called the Personalized Learning Environment, PLE. It is what helps you to choose when you want to learn, and then our system will automatically start sending you emails and reminders on your time to come back to class. Let's say, for example, you have a Q&A. Okay, you have a question about this lecture. Let's watch like few seconds. हर कोई ने फॉरेक्स मार्केट में एक या दूसरे तरीके में भाग लिया है। सोचिए कि जब आप पहली बार किसी और देश में यात्रा लेते हो, तो आपको पहले उस देश की मुद्रा या करेंसी को खरीदना होगा। Okay, so let's just say, for example, even though I don't really understand everything that she's saying, but I'm sure some of you guys do. Let's say you have a question and you're like, hey, I want to ask this educator some question. What did you say Forex is? If you ask our educator this question, it will go directly to her in the system, and she will know that this individual is asking her about this question. So all that you have to do, it will ask you, are you sure you want to save this question? Yes. Then your question has been submitted successfully and is awaiting approval. So our educators, they will see it and they will answer you maybe on the next webinar or in the next course. Let's say, for example, you are watching this webinar and you want to be able to take some notes. All you have to do is to type what you are learning, and you will save it, and it will be under this video. If there is any announcement coming up from the educator, she will let you guys know. So you will see it here, announcement coming up. Some of the announcement can be here, upcoming webinars, maybe boot camps, every single thing. And then you can also leave a review. Let's say, hey, this was one of the best information I've ever heard. You can also leave it here. And if there are other resources, you can also leave it there. Now, this is one of the ways you can be learning, but not the only ways. Let's say, for example, you want live interactions. All you have to do is to go to where it says Meet the Educators. Now, over here, as you guys can see, I want to talk about the educators here a little bit. Now, one thing that you need to understand is that we have 2 ways that people become educators here at Kleos. It's either you are being scouted, meaning myself need to make sure this educator is an incredible educator, or they come through our system.
How do they come through our system? You can come through our system by going to where it says start teaching. We will come back to the meet educators first. But let's say, for example, somebody basically want to become an educator. They will submit a request. Now, if they submit a request, they don't just get approved instantly. No, because all these educators that you are seeing here, they had to go through the CLEOS system of screening, and it takes many months for us to approve an educator to be called CLEOS expert. And so at the end of the day, one of the things you need to understand is that many weeks ahead coming, you will start to see different educators. And even currently right now, there are many ones that are still going through our KPIs and our screening to make sure that they fit the CLEOS criteria from both their track record, their communication skills, and the ability to mentor an individual. So let's say, for example, I'm going to click myself for example here. Let's say if you want to basically meet me as an educator, you will ask yourself, Cliff, by how do I know the educator to follow? No problem. We have another system that is about to be deployed called Match Me. So this system called Match Me will be beside this tab over here. What you will see is if you click on the Match Me, it will ask you for your language. It will ask you for your interests, and based on your self-assessment tests, it will recommend an educator for you as well. But let's say, for example, you decided to, let's say, click on Cliff Chikona. One of the first things that you will see here is that below here are different things that I do. There are psychology tips. There are Forex where you can see different models. There is MindX where you can learn about psychology. So let's say, for example, you want to study Forex. This is one of the courses. What do you have to do now? You have to enroll. Okay? So if you don't enroll, you cannot be able to see the videos. So let's say if you click on enroll. Now, congratulations, this video has been added to your learning. So when you now go to my learning, automatically this course has come to be added to your journey back office. Okay, so now what do you do now? You click on beginners module number 1. So let's say you want to watch my models. The first one is about what is Forex. Welcome to the CLEOS Starter Pack. So this is what we recommend. If you want to learn how to trade first and you don't speak Hindi and you speak English, you can start with this module number 1. But remember, you cannot watch video number 2 or video number 3 without finishing video number 1. And when you finish these 3 videos, there is a quiz to test you, to know that you are actually learning. And again, so on and so forth, all the way down to module number 1 being complete before you can enroll in module number 2. So if you're able to follow all the beginners courses and you are accomplishing them, now you have the right to be able to go back and now click on the Titan stage. It will automatically become highlighted with a color so you can access the Titan stage. Now, let's say, for example, you want to go and also follow some of our educators, their webinars, and so on and so forth. Let me click on, let's say, for example, Nave, or let's say, for example, even myself. Let's use myself again for an example. Let's say if you click on webinars. Now, over here, listen to this carefully now. Webinars and courses are 2 different things. Webinar is where you get live interaction with the educator. Courses are pre-recorded videos that set the foundation and give you the knowledge on the go anytime you want. But then the webinar is basically structured in time frames. So if you, let's say from Monday going, you are going to be seeing up and coming webinars, okay? And if, let's say, there is a past webinar, you can catch the videos also from here. Does that make sense? And then if you have a topic you want to request, you can also request the topic also from here. Now, these webinars, you can watch them. Also, even if you miss the live one, you can come to the past webinars and you can watch it. If you want to know the up and coming webinars, you can come here and you can also see it. So at the end of the day, you can do the same for every single educator. For example, Uzaifa, if you want to see some of his webinars, all you have to do is to go to past webinars and you can see some of Uzaifa's.
ट्रेडिंग में आ जाएगा, मजा आ जाएगा तुमको मजा भी आता है ट्रेडिंग में। क्या ट्रेडिंग फ्री नहीं जाएगा in Hindi, and we have Uzeva who speaks in Urdu. So both of them. ट्रेडिंग कर जाएगा, 1000 का ट्रेडिंग करेगा तो ज़्यादा बेनिफिट आएगा, तो बैठना पड़ेगा उसके लिए। 10,000 का ट्रेडिंग करेगा तो ज़्यादा नहीं होगा, $50,000 का ट्रेडिंग करेगा तो वो तो दिमाग हरदम लगाना पड़ेगा ना कॉन्सेप्ट को। Okay, let's say for example you're asking yourself, Cliff, how do I know how to initiate all these things and grow as a trader? Now the next thing we're going to be doing now is we are going to basically give you guys the privilege to be able to meet one of our educators here also as well, but then maybe we're gonna bring her up on next on the stage on the screen so that you guys can be able to meet her to share her testimony and how every single thing has been as well. Now with that all being said, I hope this is basically helping you guys. Sorry for a second. I hope you guys is able to understand every single thing that I'm saying. I hope you guys understand every single thing that we are saying right now. I hope the platform makes sense to you. Now, moving forward in Q1, as we have said, a lot of things is coming up. You know, the interface and every single thing that you guys are going to see well updated and every single thing. Super excited. We also do have a lot of people that we are onboarding, as I said, as educators here to be part of Clio's traders in our community. And very soon, the majority of you guys that will have the opportunity to come to our headquarters here at Dubai, you will see our new headquarters coming up. And the goal is to be able to build one of the most amazing trading floor here at Dubai. And the majority of you guys that will get the opportunity to come to Dubai, you will see how amazing and every single thing looks together with our educators as well. With that all being said, I think right now, I'm sure you guys understand every single thing that is going on. I'm going to basically pass on the call now back to Mr. Forward, and then he will help you guys that didn't understand anything that I was saying, and he will help you guys to understand, and we'll take it out from there. With that all being said, I'm going to pass it on back to you, sir. Over to you. Thank you so much. Thank you, Mr. Cliff. Before I explain, do we still have the testimony on the call? Is she still available, Nav? I'm going to confirm now. Nave, are you here with us? I'm sure we still need to make her a host. Meanwhile, you do that and maybe text Mr. Janice, her username, and we can unmute her somehow. Okay. Okay. Right. So I'm going to explain what you've said in Hindi. So first thing first, dear materials, जिस तरीके से Mr. Cliff ने explain किया detail के अंदर हमारा पूरा Clio's platform, I think पूरी customer journey के जो भी इंसान इसमें join होगा, जो भी इसमें member बनेगा Clio's के अंदर, उसके लिए क्या क्या options available रहने वाली हैं और वो किस तरीके से इससे benefit उठा पाएगा. तो I think इसके ऊपर हम एक डिटेल्ड कॉल हिंदी के अंदर भी अरेंज करेंगे या इसको कीजिएगा कि ट्रेनिंग कॉल के क्लियोस प्लेटफॉर्म को यूज किस तरीके से किया जाएगा. आज की कॉल का सिर्फ मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि हमारा जो क्लियोस प्लेटफॉर्म जो कि पिछले कई मंथ से डेवलपमेंट फेज में था, उसकी डेवलपमेंट अब कंप्लीट हो चुकी है और 2025 साल, जैसा कि हमने लास्ट ईयर इस पे बात की थी कि 2025 में ये हमारे पास अवेलेबल होगा और हम इसको यूज कर पाएंगे. और मिस्टर क्लिफ ने बड़े ही अच्छे अंदाज में आई थिंक एक्सप्लेन किया कि इस पे हमारे पास हिंदी एजुकेटर्स भी हैं, उर्दू एजुकेटर्स भी हैं, इंग्लिश में भी हैं और इसी के साथ साथ फ्रेंच एजुकेटर्स भी हमारे साथ ऑनबोर्डेड हैं जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन करेंगे हमारे तमाम यूजर्स को जो कि इसके अंदर सीखना चाहेंगे. तो अगर आप आज पहली दफा ये कॉल सुन रहे हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्लियोस क्या है, जो कि मिस्टर क्लिफ ने बड़े अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन किया, तो क्लियोस एक एक्सपीरियंस है जो कि हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम मिथेरियंस के लिए ये ऑप्शन कंपनी ने दी ताकि आप इसके अंदर सीखिए. हर एक फाइनेंशियल एजुकेशन आपको मिलेगी, चाहे वो फिर फॉरेक्स हो, चाहे वो कमोडिटीज हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे एआई हो, चाहे रोबोटिक टेक्नोलॉजी हो. तो जो भी एजुकेशन फाइनेंसिस को लेके हैं वो सारी की सारी हमने इकट्ठी की क्लियोस के प्लेटफॉर्म के ऊपर ताकि हमारे जितने भी यूजर्स हैं उनको वन डोर वन स्टॉप सोल्यूशन मिल सके और वो
जब जब हम करें इसके साथ को ये ऑप्शन हो कि वो Buy इसमें and सीख coin पाए and और लोगों को आगे इन्वॉल्व कर hold. पाए और उनको इसीलिए इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर ताकि आप बेहतर समझ पाएं और इसके साथ साथ जो लाइव हमारा जो 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 कोर्सेज हैं जो हम लाइव एजुकेशनल कोर्सेज हैं जिसको खुद हेड करेंगे मिस्टर क्लिफ वो भी 2025 में आपको देखने को मिलेंगे कि लाइव रूम जो एजुकेशन होगी कि आप उसमें ट्रैवल करेंगे और मिस्टर क्लिफ से मिलेंगे और ये आपको खुद एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से आप इन इसके अंदर आप मैक्सिमम बेनिफिट कर पाएंगे। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी। इसके ऊपर जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसके ऊपर हम ऑन बोर्ड करेंगे एक ट्रेनिंग हिंदी के अंदर, ताकि जिस तरीके से मिस्टर क्लिफ ने बैक ऑफिस को यूज किया इसी तरीके से हिंदी के अंदर एक पूरी ट्रेनिंग उसकी स्टार्ट से लेके शुरू से लेके एंड तक उसको एक्सप्लेन किया जाएगा उस ट्रेनिंग के अंदर कि इसको किस तरीके से बेहतर तरीके से यूज किया जा सकता है और इसके अंदर से मैक्सिमम बेनिफिट हम किस तरीके से ले पाएंगे। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा है। वंस अगेन मिस्टर क्लिफ, थैंक यू सो मच फॉर योर इंफॉर्मेशन and if she's still joining, perfect. If Nav is joining us, that's fine. If she isn't, then meanwhile I will connect our other speaker on the call since we're running out of time. So without further delay, I'm going to invite a very proud CEO, someone we always get to hear very often, and we always get inspired from you. अभी टाइम को ज़ाया किए बगैर हम अपने जो अगले स्पीकर हैं जो हमारे कंपनी के सीईओ हैं, आई थिंक किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सभी ही उनको जानते हैं। जो हमारे सीईओ हैं मिस्टर डनीश शेहू, वो आज हमारे साथ जुड़े इस कॉल के ऊपर। तो हम उनसे भी सुनना चाहेंगे कि साल 2025 मीथर के अंदर हम सब के लिए कैसा रहेगा और उन्होंने क्या क्या प्लानिंग्स की हैं हम सब के लिए साल 2025 के अंदर। Now I'm going to invite Mr. Dennis yourself on this call. We would like to hear what you have planned for us in 2025. Every year is a special year and things comes better and better when the time bypass. So every time when the year goes by, things improve to the better. And we are super excited to hear from you what you have in the Pandora box for us for this year 2025 and what we can expect. For example, if I am first time on the call, what can I expect as M coin holder, as riser holder, and after all as a Probot X member? What can I expect for year 2025 from you? What can we expect for our head office? What about the events? What products and services we can expect? So I want you to please give us all this information, and once you've finished, I would translate this into Hindi language so everyone understand and we all on the same page. Without further delay, one and only Mr. Dennis Shehu, sir, over to you. Thank you very much, Mr. Forward. Can you hear and see me clearly? Yes, loud and clear. Great. So from my side again, officially in 2025, Happy New Year. And I hope everybody had a great New Year's Eve. Everybody had a great start into 2025. Ladies and gentlemen, I think this is the most powerful start of Mether in any year. We have completed, as I said in the last call, 4 years of Mether. The foundation is very strong for this project. So again, quickly, Assalamu alaikum, good evening, guten Abend, wherever you are around the world, and a good evening from my side, from Europe. And for 2025, I can just do a quick recap what is planned from our side as a company. For the first quarter, you can expect, as Mr. Cliff mentioned, some updates regarding Clios and Probot X. The Clios application will come. The M20 DEX will be launched in Q1 2025. Some events are coming in the first 2 quarters, in the first 6 months of 2025. And a lot of great other products in the ecosystem, a lot of updates in our ecosystem will happen this year. For example, the M card application,
new listings of Mcoin, and don't forget 2025, the 5 at the end is also a great number for Mether, ladies and gentlemen. 5 years of Mether, but yet a lot of international speakers, a lot of guest speakers that we will invite from this industry, from other industries, and a lot of educators to give as much knowledge and content to you. So a great year is ahead, and I think everybody had a great start into 2025 with Mcoin. The bullish moments are coming back. If you check on CoinMarketCap, around 25 to 30 cents is Mcoin trading right now. So a great uptrend happened by the end. And ladies and gentlemen, don't forget one thing. Mr. Trump is coming this month into the office, into the White House. A lot of great bullish news are coming for crypto this year. And with Mether, we created a solid foundation, as I say, the past 4 years with all the products that we launched, with the ecosystem itself. If you look into the products each inside, you will see everything that we provide is a kind of problem solver out there in the market. For example, the M card. The people want to spend their cryptos, want to use their cryptos in their everyday life. It is a problem solver. Leos is a platform where you can have everything in one space and learn and educate yourself about trading. Probot X for the people who want to enjoy trading benefits. Yeah. So with a great foundation of products and a great ecosystem, we are stepping into this bullish market. And Mcoin, as I said, did a great uptrend, and the people are happy and excited. So what you can expect is, if you take now this year very serious, I think there is a famous quote, Mr. Fawad will translate, every year is like a book, and this year has empty pages. It's only 4 pages of 365 pages written down so far. It's the 4th of January while we have this call. So over 360 more days to go for you, and you can write with us together history. You can build a legacy. You can be part of this if you take your life and this opportunity very serious. Because I can say one thing, if you go back the last 10 years in the crypto market, you will see that the major bull market, the major uptrend is always coming couple months after the Bitcoin halving, after the first bullish session in crypto. So 2025 will be a life-changing year for everyone in this world. Crypto is mainstream out there. It means that even people in the grocery stores are talking about it. So I don't know any better scenario to work in an industry like where we are, with a company and products like we have. I don't know a better scenario to go out there and do a life-changing mission, use this life-changing opportunity. And from us as a company, you can expect as much support as possible, as much products as possible, and as much development as possible. I'm very proud about our biggest project that will take more than 1 year. I will say at least a decade in the future. The metaverse is coming, so be prepared to have the first interaction with our metaverse. And for 2025, Mr. Cliff announced it also, and I did in the last call. The new headquarter that we will build will be something amazing, because people can come inside the headquarter
and see with their own eyes and feel the energy, how this company is operating, how this project is operating. You will see the trading floor. People can join our podcast room. They can connect with the management and work from the headquarters. So 2025, to sum it up, is a year with full of potential for everyone. And if you use this potential wisely, trust me, I think a year like this will not come very early, because everything is in our favors. And it's common that in crypto, after a bullish year, there is something called crypto winter, where it gets calm and the crypto markets are coming down, and then the next wave is coming. So again, the markets are in our favor, the world is in our favor. Use this year to make it the best of your life. And from my side, to sum it up, we are more than prepared, ladies and gentlemen. So Mr. Pawat, back to you. Please translate and sum Thank you. up. Thank you so much. Even though I knew some of the information before, but it's always exciting to hear from someone else. I think 2025 is going to be the decisive year for us as a company and as a Metherian, because this year is going to set the tone for the next 5 years to come. And whenever we have a chat, whenever we have our meetings, Zoom meetings or face to face, we've also discussed this thing that this year, 2025, is going to be the best of the year for not only just for Ethereum, but for anyone who has to do with crypto industry, any sort of finance industry. They're going to really excel in this year. So I think it's really great time to be part of such company who has an amazing credibility behind the company. So I think we are lucky. We are so fortunate to have a company like this and a leadership like yourself and others who are leading this company with example and setting the tune for the rest of us. So thank you so much for always inspiring us and always thinking ahead of your time. We're really proud of you and all your team members for the kind of work and support you're giving us, and I really appreciate your time. What I will do is I will translate whatever you said, so for a better understanding for all our community. दोस्तों मैं क्या कहूँ कि I think even though मुझे ये कुछ information मुझे पहले से ही पता थी, लेकिन जब भी मैं दोबारा इसके ऊपर मिस्टर दनीश से सुनता हूँ तो मैं एक्साइटेड रहता हूँ. उसकी रीज़न ये है कि देखिए आप ये जो टाइम है जिससे अब हम गुजरेंगे, साल 2025 हमारी कंपनी के लिए एक डिसाइसिव साल है, एक ऐसा साल जो हम सब के लिए एक सक्सेसफुल साल बनने वाला है. और इसलिए कि जो इस टाइम पे फाइनेंशियल इन्वायरमेंट है, जो इस टाइम पे दुनिया की स्थिति है, वो हमारी फेवर में है, वो कहीं ना कहीं हमें फेवर कर रही है. और इस वक्त हम जिस जगह पे खड़े हैं, साल 2025, वो हम सक्सेस की दिशा में जाएंगे, हम सक्सेस की तरफ जाएंगे, क्योंकि सारी ही फाइनेंशियल इंडस्ट्री, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो एआई हो, चाहे वो मेटावर्स हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, कोई भी इंडस्ट्री को टच कीजिए, वो सब ही साल 2025 में बूम करेंगी. और हम क्योंकि लकीली उसी इंडस्ट्री का हिस्सा है और हमारे पास एक क्रेडिबिलिटी है पिछले 5 साल की, तो हम सक्सेस के बहुत करीब है. मिस्टर डनीस ने बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात की कि आज 4 जनवरी 2025 है. आज आपके पास एक खाली किताब है, उसके पन्ने बिल्कुल साफ और खाली हैं. अब आपके ऊपर चॉइस है, अब आप डिसाइड कीजिए आप उसको किस तरीके से लिखेंगे. आपके पास रफली 361 दिन बाकी हैं. आप जिस तरीके से चाहें, जो भी आपकी इच्छा हो, आप उसके ऊपर लिखिए और आप कामयाबी की तरफ जाएंगे. क्योंकि ये कंपनी अपने पास्ट की तरह जिस तरीके से सक्सेसफुल 4 साल मुकम्मल की और 5वें साल में एंटर किया, इसी तरीके से आने वाले कई साल आप इस कंपनी को इस तरीके से यहाँ पे ही देखेंगे. क्योंकि इसका जो लीडरशिप है
वो अपने टाइम के अहेड प्लान करती है। वो आने वाले 2 साल 5 साल को जहन में रख के कंपनी का रोड मैप डिजाइन करती है। इसी तरीके से मिस्टर डेनिस ने हमें बताया कि जो सबसे पहले आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है हमारा स्टेटवे क्लियोस ऐप, जो आपको अवेलेबल होगी Q1 के अंदर। इसी तरीके से जो है हमारा जो M20 जो डेस्क है वो भी आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ कुछ इवेंट्स प्लान है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। कुछ इवेंट्स दुबई में हम प्लान कर रहे हैं आपके लिए, कुछ लीडरशिप इवेंट्स होंगे वहां पे। इसी के साथ साथ कुछ रीजनल इवेंट्स भी चलते रहेंगे। लेकिन मजा आएगा Q2 के अंदर। Q2 में आपको क्या एक्सपेक्ट करेंगे? सबसे पहले Q2 में आपको जो हमारा नया हेडक्वार्टर, देखिए कहीं ना कहीं आप लोग दुबई ऑफिस में आए, अपने ऑफिस को विजिट किया, अपनी टीम्स के साथ विजिट किया, लेकिन आपकी मुलाकात कुछ ट्रेडर्स के साथ नहीं हो पाई। कुछ लोगों की हुई भी, लेकिन मेजॉरिटी की नहीं हो पाई। तो अब जो प्लान कंपनी ने किया साल 2025 को लेके, हमारा जो नया हेडक्वार्टर बनने जा रहा है, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं। और मैं प्रॉमिस करता हूं आप सबसे कि आप जब उस हेड ऑफिस के अंदर पांव रखेंगे तो आपकी एक्साइटमेंट का लेवल मेरे से भी ज्यादा आगे जाएगा, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी सब कुछ इन हाउस कैसे करती है। और आपको इसी तरीके से एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो आप एग्जांपल देंगे, जाके वापस आप पिक्चर्स बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे। हमारा जो हेडक्वार्टर जो इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन फेज से अभी गुजरेगा आने वाले कुछ ही समय में, तो आपको सेकंड क्वार्टर यानी कि अप्रैल के बाद आपको उसमें इनवाइट किया जाएगा। जो भी लोग लीडरशिप पोजीशन पे होंगे या लीडरशिप रैंक्स पे होंगे, आप आएंगे और उस पर विजिट करेंगे और वीडियोस भी होगी। और वहां के ऊपर आपके साथ आप ट्रेडर से भी मिल पाएंगे। और बड़ी ही एक्साइटिंग न्यूज जो कंपनी ने प्लान की है ऑफिस को लेके, जो हमारा नया हेडक्वार्टर दुबई में रहने वाला है। इसी के साथ साथ बाकी भी आपने देखा कि साल 2025 के शुरू होते ही हमने मार्केट में एक अच्छा बूम, एक अच्छा मोमेंटम देखा। और ये मोमेंटम क्यों आया? ये मोमेंटम इसलिए आया कि लोग ये समझते थे कि जो पिछला बिटकॉइन ने मूव किया या क्रिप्टो इंडस्ट्री ने मूव किया, शायद वो क्रिप्टो का बुल रन था, लेकिन ऐसा नहीं है। मिस्टर डेनिस ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि जब भी क्रिप्टो का बुल रन आता है तो वो बिटकॉइन की जो हैविंग है उससे 6 माह बाद, लगभग 6 माह बाद आप क्रिप्टो के अंदर मूव देखते हैं। तो अब जो मूव हमें नजर आना शुरू हुआ, अभी ये बिल्कुल शुरू की स्टेज है, अभी असल मूव हम आने वाले कुछ समय में देखेंगे। अब ये जो मूव आया और प्राइस एक्शन में हमने बढ़ोतरी देखी, हमने एम कॉइन को ऊपर जाते हुए देखा, इसके साथ साथ बाकी क्रिप्टोज भी मूव हुई जो पहले मूव नहीं थी। तो ये हम सब के लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज है। आप सब भी एक्साइटेड हैं, हम सब भी एक्साइटेड हैं। लेकिन आने वाले समय में आप एक बहुत अच्छा मूव देखेंगे सभी क्रिप्टोज के अंदर, इसके साथ साथ एम कॉइन के अंदर, राइजर के अंदर आप एक अच्छा मूव अपवर्ड्स देखने को मिलेगा हमें इस साल 2025 के अंदर। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात जो मिस्टर डेनिस ने शेयर की, जो कि है हमारा ग्लोबल सक्सेस इवेंट, जो कि कंपनी प्लान कर रही है इस साल के एंड की तरफ, जो ग्लोबल सक्सेस इवेंट होने जाएगा, उसके अंदर हम और लगभग 10,000 लोग एक ही मंच पर इकट्ठे होंगे। और हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, दुनिया के जो बड़े स्पीकर्स हैं वो भी हम उनको भी ऑनबोर्ड करेंगे इस इवेंट के लिए, ताकि हम मिलके एक सक्सेसफुल इवेंट करें और अपने साल की 5वीं सालगिरह मिलके इसके अंदर हम इसको सेलिब्रेट कर पाएं। तो आई थिंक ये कुछ ऐसी न्यूज़ हैं जो हमारे लिए बड़ी ही मोटिवेशन का हिस्सा है कि हम साल 2025 को फुल फोर्स में अपनी पूरी ताकत से शुरू करें, ताकि जब 2025 हम शुरू के अंदर पूरा जोर लगाएंगे, तो इसी तरीके से ये जो टून हम अभी सेट करेंगे, ये पूरा साल हमारे साथ इसी तरीके से ही चलती रहेगी। तो आई थिंक हमारी जो टेस्टिमनी थी वो अभी मैंने देखा कि वो हमारे साथ आ गई हैं, मिस नेव, जो हमारी एजुकेटर भी हैं हिंदी लैंग्वेज की। तो मजे की बात है कि वो हिंदी में ही हमारे साथ अपनी जर्नी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू इनवाइट नेव ऑन द कॉल to please come on and share your testimony with us. I just saw you became the host, so Nev, over to you. Please do share in Hindi, so I don't have to translate you. नमस्ते नमस्ते और धन्यवाद
मुझे इनवाइट करने के लिए। तो इंट्रोडक्शन के लिए, मेरा नाम निफ है या निवेदा, और मैं क्लियोस की हिंदी एजुकेटर हूँ। 2025 की शुरुआत में इस इवेंट को ज्वाइन करते हुए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और बहुत धन्यवाद मुझे इस इवेंट में इनवाइट करने के लिए। मैंने काफ़ी सारे फॉरेक्स इंडस्ट्री में कंपनीज को देखा है और टीम्स को भी देखा है, उनकी डायनामिक और कैसे कंपनी की ईथोस है, ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। लेकिन क्लियोस ये एक बहुत अनोखा मौका है मेरा, क्योंकि इस कंपनी में मैंने देखा है कि टॉप लीडर्स की माइंडसेट जो है बहुत अलग है। वो हमेशा सोच रहे हैं कि कैसे हम ऐसे एक प्लेटफॉर्म बनाए जो लर्नर्स के लिए एक्सेसिबल हो, इजी हो और बहुत इंटरैक्टिव भी हो। मैंने काफी सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे देखे हैं जहां वीडियोस है, कोर्सेस है, ये काफी आम है फॉरेक्स की इंडस्ट्री में। लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म मैंने नहीं देखा है जहां हम इंटरैक्टिवली टीच कर सकते हैं। सारे लर्नर्स को अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि आप क्वेश्चंस पूछेंगे, आप अपने खुद PLE या पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस बना सकते हो इस प्लेटफॉर्म में, जैसे हमारे एजुकेशन डायरेक्टर क्लिफ चिकोना ने अच्छी तरीके से समझाया। तो इसी तरह मेरी उम्मीद है कि आप सब ज्वाइन करोगे मेरे इस जर्नी पे, और हिंदी में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि कैसे आप सब फॉरेक्स ट्रेडर्स बन सकते हो। और मेरा ये भी उम्मीद है कि मैं इस साल दुबई आऊं और नई ऑफिस में आके आप सबको इन पर्सन भी मिलूं। तो थैंक यू वेरी मच इस एक्सपीरियंस के लिए, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम कहाँ जाएंगे इस साल और हम कैसे इस प्लेटफॉर्म को नंबर 1 बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू निफ, अप्रिशिएट दैट, थैंक यू सो मच। और जैसा कि आपने सुना मिस निफ से कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज, आप हर रोज उन कंपनीज को देखते हैं, या जो लोग इसमें काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो वो आपको जो जो सच्चाई की तरफ बात है उससे हटकर आपको कुछ ऐसे नंबर्स दिखाएंगे, कुछ ऐसी परसेंटेजेस दिखाएंगे कि हम इतना काम कर रहे हैं, इतना रेवेन्यू कर रहे हैं, इतनी परसेंटेज हमें मिल रही है। तो इसको अगर आपने सही मानों में समझना है तो आपको मिस निव की क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। और मजे की बात यह है कि वो इतनी अच्छी और शुद्ध हिंदी बोलती हैं, तो आप जब इनकी क्लास में आप आएंगे तो आपको सही भाषा में समझ भी आएगी। अगर आप कहीं पे स्टक होंगे तो आप इनसे पूछ भी पाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी कर पाएंगे। तो आई थिंक हम बहुत एक्साइटेड हैं निव टू हैव यू ऑन बोर्ड। हम एक्साइटेड भी हैं आपके साथ। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू एज वेल। सो उनके साथ काम करने के लिए भी हम एक्साइटेड हैं। सो थैंक यू सो मच निव, थैंक यू, वी अप्रिशिएट योर और इसी के साथ आई थिंक अगर हम इसको अपनी बात को मुकम्मल करें तो जैसा कि मैं कह रहा था कि साल 2025 एक्साइटेड, फुल ऑफ एक्साइटमेंट हमारे इकोसिस्टम को लेके। मीथर के इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो ये भी जितनी तेजी से ग्रो हो रहा है उसमें भी ये अपनी मिसाल आप है। और अब क्लियोस जो हमारा फुली एक्टिव है जो प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर एजुकेटर्स भी आज कॉल के ऊपर आए। इसी के साथ हमारा इकोसिस्टम के अंदर, जैसा कि मिस्टर डेनिस ने बड़े अच्छे तरीके से बताया, कि नई लिस्टिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स Q2 एम कॉइन को लेके। हम जो सेकंड क्वार्टर के अंदर हम नई लिस्टिंग्स हैं एक्सचेंजेस की, उसके अंदर हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक ऑल इन ऑल हमारे लिए एक बहुत सक्सेसफुल साल होने जा रहा है। तो विदाउट फर्दर डिले मैं मिस्टर डेनिस को लास्ट टाइम इनवाइट करना चाहूंगा कि वो अपने फाइनल रिमार्क्स दें और हम इस कॉल को क्लोज करें। सो मिस्टर डेनिस, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू बैक ऑन द कॉल फॉर फाइनल रिमार्क्स before we end this call today. What would you like to say, sir? Sure. Thank you, Nif, very much for your introduction and review. Thank you so much for being on the call. So, ladies and gentlemen, just to sum up this call and to give you a quick guidance for the new year, some tips. The first is, and this is our major priority in the whole company, educate yourself as much as possible about crypto, about the markets itself, especially about the project, what we are doing. Bring as much people as possible to show them the opportunity, because there are
buy aim coin in day by day for their life forward. And to be honest, in 2024 and 2025, it's very confusing nowadays to search maybe for a side hustle, to search maybe for a new job, because we all get flushed and rushed by social media. We don't know what is working, what is not working. But here, as I said, we have a great, great foundation since the past 4 years, and so many examples in our company to showcase how successful this business is running for the past years. And last but not least, attend as much Zoom calls, as much meetings, and meet as much individuals from the company, leaders, Spartans as we call them, and get educated by them how they been so successful the past 4 years. And I think after that, there is nothing left that will not bring you to success, because, as we always say, the foundation is great. The people are working day and night. I'm very, very proud to have individuals like our global crown ambassador, Mr. Tahir Hussein, our country head, Mr. Eklavia, many Spartans, great people like Mr. Favre teaching us, all the educators. So 2025 will be a great, great year, ladies and gentlemen. Don't miss any day. Don't let any day out going without increasing your success for at least 1% a day. And I think you're good to go to be very, very successful with us as a company. So thank you very much. Please, Mr. Fawad, Thank you so much. And I think what a beautiful message you have left for us. And I would like to add one or more things in this. So I think Mr. Denise ने बहुत ही important message जो कि last में उन्होंने explain किया. उन्होंने कहा कि मेरा जो last message है आप सबको इस साल की पहली call का, वो ये है कि आप सब अपने आप को educate कीजिए. और जब आप इस properly educate करेंगे अपने आप को इस industry के बारे में और स्पेशली कंपनी मीथर के बारे में, तब ही आप सामने वाले को सही तरीके से अपनी बात को समझा पाएंगे. और इस बात का विटनेस मैं भी हूं कि जब भी हम किसी मिथेरियन से मिले, चाहे वो ऑफिस में मिले, चाहे हम उसको कहीं बाहर मिले, तो मेजॉरिटी लोगों को जब हमने प्रेजेंटेशन दी, अगर मिस्टर डेनिस ने उनसे बात की या मैंने की या बाकी कुछ लीडर्स ने बात की, तो उन्होंने यही कहा कि सर हमने तो ये मीथर पता ही नहीं था, हमने तो इसको समझा ही नहीं. तो कहीं ना कहीं आई थिंक एज अ लीडर ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको सही तरीके से पहले खुद समझें. और मिस्टर डेनिस का जो एजुकेशन का मकसद ये था कि हम अपने आप को एजुकेट करें कि मीथर है क्या और ये करने क्या जा रही है, इसका पर्पस क्या है मीथर का. तो ये जब तक आप नहीं समझेंगे तो आप सामने वाले को अपनी बात सही तरीके से, सही भाषा से नहीं समझा पाएंगे. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप खुद भी समझें और अपनी बात सामने वाले को भी समझा पाएं. और इसी के साथ मिस्टर दनीश ने कहा कि इस वक्त दुनिया के अंदर सभी लोग साइड हसल यानी कि दूसरा काम की तलाश में है, दूसरी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है. तो ये आपके ऊपर ऑब्लिगेट है, ये आपके ऊपर फर्ज है कि आप मैक्सिमम लोगों से इस कंपनी का जो आइडिया है वो शेयर कीजिए, मीथर को शेयर कीजिए, प्रोबोट एक्स को शेयर कीजिए, हमारे क्लियोस प्लेटफॉर्म को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे पास जो है वो मार्केट में किसी और के पास नहीं है. हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी जो लीडरशिप है वो हमारे पास है, सबसे बड़ी डेवलपमेंट टीम हमारे पास है, और सबसे बढ़कर हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 4 साल का सक्सेस रिकॉर्ड, वो इस टाइम पे दुनिया के अंदर किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नहीं है. आपको नहीं मिलेगा कि कोई ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो पिछले 4 साल से सक्सेसफुली ग्रो हो रही है और अपने 5वें साल में है. अब तक जो लोग शुरू में जुड़े थे, जो कि स्पार्टन्स हैं हमारे, उसी के साथ बाकी लीडर्स भी जो शुरू में जुड़े थे, आज 5 साल बाद वो लोग भी हमारे साथ खड़े हैं. तो आई थिंक सक्सेस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. कामयाबी अपने सर चढ़कर बोलती है. तो यही कामयाबी है कि
हम वही लोग हैं जो शुरू में शुरू किया था इस जर्नी को, आज भी वही हैं। आने वाले 4-5 साल में भी यही लोग होंगे जिन्होंने इस काम को शुरू किया, क्योंकि हमारे साथ बहुत अच्छे लोग जुड़े। मिस्टर डनीस ने नाम लेकर बोला, जो हमारे मिस्टर ताहिर हुसैन साहब हैं, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस कंपनी को समझा और समझाया और बिल्ड किया। इसी के साथ कंट्री हेड मिस्टर इकलाविया जी हैं, मिस्टर अनुराग गेरा हैं, मिस्टर साजवान हैं। इसी के साथ सारे स्पार्टन्स जो अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर, अपनी अपनी रीजन्स के अंदर कंपनी को बिल्ड किया, कंपनी की क्रेडिबिलिटी को, कंपनी के इमेज को आप सब लोग आगे लेके, आई थिंक हमारा मिशन है कॉर्पोरेट से लेके Buy and coin and एग्जीक्यूटिव जो है ना कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए सक्सेस हम इसलिए कर पाए कि हमारा ऊपर से लेके सीईओ से लेके एक एग्जीक्यूटिव तक सारी टीम एक पेज पे है। और इसीलिए इस कॉल को थोड़ा लंबा किया जाता है ताकि आपको हिंदी भाषा में प्रॉपर समझ आए और एक्सप्लेन किया जाए कि आपका गोल और कंपनी का गोल एक होना चाहिए। अगर हम सब मिलके एक ही सिमत में चलेंगे तो हम कामयाब होंगे। अगर अपने अपना रास्ता चुनेंगे तो ना कंपनी कामयाब हो पाएगी, ना आप कामयाब हो पाएंगे। कंपनी की भी सक्सेस इसी में है कि हम सब जुड़कर आगे की तरफ जाएं, और हमारी सक्सेस और भी इसी तरीके से है कि हम कंपनी के पीछे चलें और अपनी कामयाबी तक पहुंच पाए। आई थिंक आज की कॉल बहुत ही सक्सेसफुल कॉल है, क्योंकि हमने जो बहुत सीखने को मिला, नई चीजों को जानने को मिला। हम इस कॉल का सिलसिला इस साल इसी तरीके से करते रहेंगे। हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। जब भी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च होगी, जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन होगी, हम साथ साथ आपके साथ ये कॉल्स अरेंज करते रहेंगे, आपके साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे। और इसी के साथ मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ मीथर M20 सारी फैमिली, आप सबको मैं नया साल एक दफा फिर मुबारकबाद देता हूं। और जो मिस्टर डेनिस ने बोला कि हमारे पास 365 दिन हैं, जिसमें से सिर्फ 4 दिन गए, अभी हमारे पास 361 दिन बाकी हैं। अपना आने वाला भविष्य खुद लिखिए, खुद डिसाइड कीजिए कि इस साल आपको कितना पैसा कमाना है, आपकी हेल्थ कितनी अच्छी होनी चाहिए, आपकी फैमिली रिलेशन कितना अच्छा होना चाहिए, अपने फैमिली से कितना टाइम स्पेंड करना है। क्योंकि हमारा गोल ये है कि हमने सिर्फ एक जगह पे कामयाब नहीं होना, हमने सिर्फ एक सेक्टर में कामयाब नहीं होना। एज अ मिथीरियन हमने एक अच्छा बिजनेसमैन बन के सामने आना है, अच्छा एंटरप्रेन्योर बन के सामने आना है, अच्छा फैमिली मेंबर, अच्छा कम्युनिटी मेंबर और एक अच्छा नागरिक बन के सामने आना है, ताकि हमारी मिसाल दुनिया में दी जाए कि हम एक ऐसी कंपनी से निकले जिन्होंने इतिहास कायम किया। सो थैंक यू सो मच। जहां रहिए खुश रहिए, अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिए। वी आर वन, वी आर मीथर। गॉड ब्लेस यू।